Okay, so last class में हम लोग we were discussing about overfitting and underfitting. We just understand what is overfitting and underfitting. Can you guys tell me what is overfitting? Anyone? Overfitting और underfitting क्या है बच्चे? In the last class we discussed it now. Can anyone tell me? No one? Okay, no issue. Uh, Overfitting is when your model is performing well on training data but not in testing data, right? And underfitting is the case where your model is neither performing well on training nor in test data, right? And best fit is when your model is performing good. We are not saying it will perform well, but it is performing good in both cases, training and test set. At least it is performing good. If it is performing well on both cases, that will best fit. Otherwise, good fit will be the case when it is performing good in both cases, right? So these all things we discussed in last lecture. Today we will covering preventing overfitting and underfitting, right? Okay. So in case of underfitting, what we can do to solve that? Either we will choose another model. We will choose a alternate ML model which will perform good on training data, right? So in case if you are not getting good performance on training data, you need to change either model or you need to check your data or noises, right? So in most of the cases, what we will do, we will simply change the model first. We will evaluate other models, and if other model is performing well, then we can choose that model for our problem statement, right? Second solution could be we can increase the data, right? There may be the chance that if you are getting low error, low accuracy at training data, there may be the chance that you are having low data, low amount of data, right? That's why it is not getting or it is not inferring some good rules, common rule for all the data elements present in the data set. So sometimes if you are having low data, less data, you need to increase that. After increasing the data, you may find that your accuracy of the model will be increased, right? Or underfitting will be the case where we are setting a simpler model, right? We are setting a linear model on non-linear data set. In that case also you are getting underfitting problem, right? So in that also case you can increase the complexity of your model. You may develop a non-linear model for particular data set. That then there may be the chance that it will avoid underfitting condition. It will give good accuracy rather than linear model, right? Right, guys? And cause of underfitting may be that you have not chosen the correct features. You have not provided correct features to your model. Maybe the chance that you are providing features which are irrelevant to the output variable, which is y, right? So in that case also, you falls under the underfitting. So that in that case, you need a good feature extraction technique so that you will select best features from the data set and then pass it to the machine learning model, and then you will get good accuracy, improved accuracy on that particular model, right? Because it is totally data centric technique. ML is totally data centric technique. If you are providing vast data, you will definitely get vast performance. If you are providing good data, relevant data, or correlated data, then only you are going to get good performance from your developed model, right?
In that case, if you are not providing, and if you are providing all the features present in the dataset to the machine learning model, there may be the chance some of the features are noises because they are irrelevant to your target variable, right? So which features are irrelevant to your target features, that may be considered as noise. So for that, we need to do proper pre-processing and noise removal at the time when we are going to pre-process our data, right? So by this way, you can also avoid underfitting, right? And in case of deep learning models where you are having number of layers, hidden layers, at that time, if number of iteration, you can increase the number of iterations, right? In deep learning, if you are getting low error, there may be the chance that you are not providing complete iterations or appropriate iterations or epochs at the time of training. So avoiding early stopping, you may increase the number of epochs so that once you get a perfect accuracy on selected number of epochs, then maybe the chance there you will get the better accuracy by that particular model. So sometimes if we used to early stop the model, and due to that also we can get underfitting condition. So avoiding underfitting condition, we need to increase the number of epochs sometimes, right? It is not a general rule, but sometimes, because it is totally error and trial and error based technique. So you need to find a appropriate number of epochs where you are getting good accuracy. At that point, you need to stop the iteration on the data set, right? At the time of training phase, right? So this is all the methods we are having to avoid the underfitting condition, right? I think you got my point. Everyone got this, guys? Have you understood that? Yes, sir. Okay. This all what we can do to avoid our underfitting, right? If your model is underfitting, then only these solution will work, right? Now come to the our overfitting case. Overfitting case. Okay. So how we can prevent overfitting? What it is overfitting? What is overfitting? It is when we are getting high accuracy on training data, but we are not getting high accuracy on our testing data. That will be the case where our model is failed to generalize the rules, right? It learned the rule perfectly, but it is not generalizing the rule on test data, right? So this is due to the reason that we have some sampling problem, right? It could be the sampling problem. Maybe the chance we have we have some different data on training data set and slightly different data on test data set. That's why sometimes we are not getting good accuracy on test data. So for that, for ensuring proper sampling mix, we need a technique called cross validation. I think you already understood it in the previous lecture. Uh, I already told you where we partition data into two parts: training set and test set. Test set will remains constant, but training set in the training set we further divide it into the validation set and validation set and train set, right? Let me choose. Let me define it using example. Just a minute. Opening the I'm opening that slide where we discussed it. Uh,
Let me give me 1 minute. ML intro, I think this one. Yes, in this slide we already discussed in previous lectures. Where it is? Yes. So we used to divide our complete data set into training set and test set, right? That's how we do the data split, right? And best practice is when we divide our full data set into two set training set and test set, and after that I will also divide training set into further two sets where what is training set and validation set, right? This is the constant split. But in case of cross validation, what we do, we we used to we used to divide our complete training set, this blue one. Forget about green one. This is our test set. This remains constant. This will be used for final evaluation. But in train set will be bifurcated into multiple or n number of groups, right? Let's say if you are having 100 instances in train set, what you will do, you will break it into the 10 constant size groups, right? And every time at every split you are making one set as a validation set and remaining 9 set as a train set. In the second split, you will choose second group as a validation set, which is shown in red color, and remaining 9 set will act as train set. And in the split third, you will have third one as a validation set and remaining 9 as train sets. And similarly, after k-fold, that means 10 splits, you are having 10 validation set, different validation set on which you are going to train your model. So first split, you will train according to this one. First one will be validation, remaining time 9 one will be train set. Uh, After first iteration, you will get further second group as a validation set, and this is how you will train. This is called cross validation, right? By using cross validation, you are going to improve your accuracy, right? Now your model know that this will be the rules which we are going to implement on test set, right? So this is how cross validation works. I think it is clear to you. अभी क्या करने का है हमें इसमें क्रॉस वैलिडेशन में क्या होगा बच्चे, जो ट्रेन सेट है आपका, जो एक तो आपने टेस्ट सेट जो आपने बनाया पहली बार, उसको तो आपने अलग रख दिया बिल्कुल इवैल्यूएशन के लिए, फाइनल इवैल्यूएशन के लिए। बाकी क्योंकि चांसेस आर देयर कि अगर आप कांस्टेंट यूज करते हैं, अगर एक कांस्टेंट वैलिडेशन सेट आप यूज करते हैं, तो चांसेस आर देयर कि जो सैम्पलिंग एरर है वो हो सकती है उसमें। बट अगर आप हर बार उसे सेम डेटा सेट पे ट्रेन करने वाले हैं, बट हर बार उसका वैलिडेशन सेट चेंज करते जा रहे हैं, तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा वो, क्योंकि नाउ हर टाइम वो अलग अलग वैलिडेशन सेट पे उसे चेक किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसने हर तरह के डेटा को अपने आप को इवेल्युएट कर लिया है। हर ग्रुप पे उसने अपने आप को इवेल्युएट कर लिया है, और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई इसकी एक्यूरेसी इतनी है ट्रेनिंग सेट में, राइट? तो दिस इज हाउ क्रॉस वैलिडेशन वर्क, right? This is important technique. We used to use cross validation most of the time, right? So by using cross validation, we can prevent overfitting, right? This is that's what we have in this data. Use your initial training data to generate multiple mini train test split. Use this split to tune your model, right? Why we are doing that? Because we are going to tune our model. In first split, if we are not getting good error, then we will check for next split. We will check for next split. That means we are somehow
tuning our model, right? Standard k-fold cross-validation. We partition the data into k subsets called folds. Then we iteratively train the algorithm on kn minus 1 folds while using the remaining folds as a test set, right? Hold out fold, we can say. Cross-validation allows you to tune hyperparameters with only your original tuning training data set. This allows you to keep your test set data set as a truly unseen data set for selecting your final model, right? तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम दो सेट में बांट देते हैं, ट्रेन सेट और टेस्ट सेट ओनली। और ट्रेन सेट में हम ट्रेन करने के बाद विदाउट क्रॉस वैलिडेशन हम सीधा उसको टेस्ट सेट पे अप्लाई कर देते हैं। बट हम क्या करना, इस केस में क्या होगा, जब हम लोग क्रॉस वैलिडेशन नहीं कर रहे होंगे तो चांसेस आर देयर जो टेस्ट सेट में उसका अनसीन डेटा है वो उसमें कुछ सैम्पलिंग प्रॉब्लम की वजह से वो आपको परफॉर्म ना करने दे। क्योंकि अगर आपने एक बार उसे टेस्ट सेट दे दिया इवेल्युएशन के टाइम पे, तो अब आपके पास फर्दर उसको ट्यून करने के लिए कोई मौका नहीं रहा, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं रही आपके पास कि आप उसको अब फर्दर टेस्ट कर सको। क्योंकि अब उसने टेस्ट सेट का डेटा भी देख लिया आपके मॉडल ने। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सेट का डेटा उसको तब तक नहीं दिखाते जब तक कि हम उसको प्रॉपरली ट्यून ना कर दें। तो फॉर ट्यूनिंग द हाइपर पैरामीटर ऑफ पर्टिकुलर मॉडल, what we'll do, we will simply split our data into the k folds, right? K subsets, and on every iteration, every fold, what we are doing, we are changing our validation set, or we are traversing our validation set, or sliding our validation set, right? So after a certain number of k folds, what we'll find that after certain number of folds, our model is getting good error, or that means it is generalizing the rules properly. Now, when after cross validation, when we provide test data to the after cross validation, when we find that our model is doing well and there is no scope of increasing accuracy, then only we will test it on the test data set. Then we'll check if it is showing good error on test data or not. Definitely it will show good error because validation set has been changed k folds time, right? If k value is 10, then that means after k fold 10 folds, it will generalize all the rules learned from the data. So we cannot say that there will be sampling error because we tested or we validated our model on every data points present in the data set, train set, right? So there will be less chances that we will get low accuracy at test set, right? Are you understanding? Yes, sir. Okay. Now, this is the one technique where we remove sampling error by using cross validation. And by using cross validation, we can avoid overfitting, right? Okay. Next, come to see train with more data. Definitely, if you are having more data, definitely there are more chances that model will learn proper or perfect rule from the data provided to it. If you are using less number of data, definitely rules will not be generalized. But if you are having more data and more data, large data, that means they have large number of instances of particular data. That means it will learn. Chances are there that it will learn proper rule, at least perfect rule from the data set, right? So if we are increasing training data, that means we are going to avoid overfit. Same thing written here. It won't work every time, but training with more data can help algorithm detects the signal better. Signal means rules, right? As the user feeds more training data into the model, it will be unable to overfit all the samples and will be forced to generalize to obtain result. Same we are discussing. That means our ML model will will generalize rules perfectly if it is having large data, right? If it is having only two or three instances, we cannot say it will work on every possible unseen. It will able to predict or classify every possible unseen data. But if let's say if say
we are having 1,000 instances in the data set, and 10 instances remains for training test set, and 990 instances were used as training set. So if we train the data on 990, then there will be the less chances that it will misclassify 10 instances present in the test set, right? So that's why we want large data. So sometimes it will work, but maybe the chance it won't work, right? But most of the time it will work, right? Users should continuously collect more data as a way to increasing the accuracy of model. This is the basic rule. However, this method is considered expensive. Yes, obviously, if you need large data, definitely it is expensive in terms of cost, in terms of searching, like that, right? So therefore, users should ensure that the data being used is relevant and clean. This is the important point. If you are having large data, it doesn't mean that you will get perfect accuracy on that particular data. But if you are selecting relevant and clean data from the data present in the data set, then you may say that, or we can say correlated data, right? So if you are providing correlated data, which is directly related to your output variable, then you may say that model will generalize the rule perfectly because it is working on the features which relevant features which we have provided it. But if we are not providing relevant features, we are providing irrelevant features which is not directly connected to your output variable, then there may be the chance this method won't work, right? Of course, that is not always the case. If you just add more noise data, this technique will not help. See, if you add more noise data means which are irrelevant to your output variable, right? This technique will not help. But if you are providing more relevant data, definitely it will going to increase accuracy or decrease overfitting, right? Right, dear. So this will be the second second technique we can have to avoid overfitting or to prevent overfitting. Next technique we can have data augmenting. Data augmenting is something where you are going to create a data from the data present in the data set, right? Are you understanding my point? Data augmentation is nothing. It is simply creating a data from the data set itself. Sometimes you don't have more data. In case of medical diagnosis or medical detection, medical images, medical data, you don't have large amount of data. You cannot get data of 1 lakh patients because there is a privacy issues, right? So definitely, most of the time, you will get data of 100 patients, 200 patients, 300%, not more than that, right? In that case, how you will apply deep learning or machine learning on that because your data is very less. In that case, what we will do, we will simply uh, simply create images or create images of scans provide available with us at the in the data set. Let's say we are having 100 scans of 100 users, right? So what we will do, we will create further uh, 3 4 times images per images, 4 images per images by using data augmentation technique. In the data augmentation technique, what we will do, we will simply select a image and make a copy in mirror scale, right? We mirror that image, we got one additional scan. We reflect that particular image, we will get another scan. Or we translate rescale that particular image, or we crop that particular image. So every time when we perform these operations, every time we generate a new image for that particular scan. So for example, if you are having, let's say if you are having 4 operations, that means we will get 4 additional image per, for one image selected from the data set. That means if we are having 100 images, we will we will increase our data by fourfold. That means we will get 4 times of data. Now after the augmentation, we will have 400 images, right? That's how data augmentation works.
राइट। हम इसमें क्या करते हैं बच्चे, जो भी हमारे पास अब जैसे मेडिकल के केस में हमारे पास जो भी हम अगर इमेज इमेज डेटा पे काम कर रहे हैं, तो इमेज डेटा मान लो आप कैंसर पे काम करो, लंग कैंसर पे काम करो, उसकी इमेजेस आपको चाहिए। तो उसकी इमेजेस आपको जो प्रोवाइड हुई हैं, मैक्सिमम जो आप कलेक्ट कर पाए हो वो केवल 100 इमेजेस ही आप कलेक्ट कर पाए हो अलग अलग हॉस्पिटल से, राइट। अब इस पे अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल लगाओगे, तो देयर इज द चांस कि आपका जो एक्यूरेसी है वो उतनी अच्छी ना आए, क्योंकि आप आपके पास लेस अमाउंट ऑफ डाटा है। बट आपके पास एक टेक्निक है डेटा आर्गुमेंटेशन आर्गुमेंटेशन नाम से, जिससे आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं भाई, हमने एक इमेज ली, उसका उसकी हमने उस पे हमने तीन चार ऑपरेशंस लगाए, हर एक ऑपरेशन से एक इमेज जनरेट होगी, वो एक अलग इंडिविजुअल इमेज कहलाएगी आपकी, राइट। तो जैसे हमने उसमें लगाया कि भाई क्रॉप कर दिया, सेलेक्टेड रीजन पे क्रॉप कर दिया, किसी कुछ कोऑर्डिनेट्स पे हमने उनको क्रॉप कर दिया, तो जो क्रॉप्ड इमेज है वो भी उसकी एक कॉपी बन गई, राइट। ऐसे ही फिर हमने उसको किसी एंगल पे रोटेट कर दिया, तो उस वो जो रोटेशन से जो हमें इमेज मिली, वो एक और इमेज हो गई। फिर फर्दर दूसरे एंगल पे रोटेट कर दिया, वो एक इमेज मिल गई। फिर हमने उसका एक रिफ्लेक्शन वाली ले ली, मिरर इमेज ले ली, वो भी एक इमेज हो गई। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी आप ऑपरेशंस एक इमेज पे परफॉर्म करोगे, तो जो भी उनसे इमेजेस जनरेट होंगे, जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, अगर 5 नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए सेम इमेज में, तो आपके पास हर एक इमेज के अगेंस्ट 5 एडिशनल इमेजेस आ गई, राइट। तो अगर आपके पास 5 ऑपरेशंस थे, दैट मीन्स आपके पास अगर 100 का डेटा था, तो आपका डेटा अब कितना हो गया, 500 प्लस 500, दैट मीन्स 600 का डेटा हो गया अब आपके पास। अब वो डेटा आपका जो है टोटल 600 का हो गया, यानी कि अब आपका पास लार्ज डेटा हो गया, थोड़ा उससे बढ़ गया डाटा। तो जब आपका डेटा लार्ज हो गया, इसका मतलब अब आपका ओवरफिटिंग की कंडीशन कम हो जाएगी, राइट। समझ रहे हो बच्चे? यस सर। Yes, sir. अगर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी ड्रॉ इट। आपको अभी इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, ठीक है। आपके पास कोई इमेज थी, ये जिसमें आपका मान लो ये टी टी है, मतलब एग्जैक्ट उसमें इमेज में तो कोई कुछ इमेज होगी, बट यहाँ पर आपका ये एक इमेज है। एक इमेज है आपके पास, टोटल 100 इमेज है, उसमें से एक इमेज आपकी ये है, राइट। तो जब आप डेटा ऑगमेंटेशन अपनाओगे, तो आपके पास लेट से आपके पास ऑपरेशन आपने क्या किया, एक ऑपरेशन तो आपने किया, इसका मिरर ले लिया। मिरर ले लिया यानी कि, चलो मिरर के केस में टी वाला तो काम नहीं करेगा, तो ये तो आपका इनवैलिड हो गया। दूसरा ऑपरेशन आपने किया कि भाई आपने इसको किसी डिग्री पे रोटेट कर दिया, टी आपने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, राइट। तो आपने अगर ये चार ऑपरेशन अपनाए इसमें, इसमें आपने इसको रोटेट कर दिया, और एक ऑपरेशन आपने अपनाया जिसमें आपने इसको क्रॉप कर दिया। तो क्रॉप करने के बाद मतलब इतना एरिया आपने क्रॉप कर दिया, राइट। तो एक मिनट बचे हैं। तो आपने 5 ऑपरेशंस अपनाए डाटा ऑगमेंटेशन में आपने एक इमेज के अगेंस्ट 5 ऑपरेशंस अपनाए। तो आपके पास 5 एडिशनल इमेजेस आ गई, ये 5 एडिशनल इमेजेस आ गई आपके पास, राइट। राइट, ऐसे ही करके आप फर्दर 99 जो बचे हुए हैं उन पे भी करोगे, उनके भी पांच 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 करके ऐड होंगे। तो यानी कि अगर आपके पास 100 डाटा डाटा सेट में 100 इमेजेस थी, तो अब आपके पास डाटा सेट में कितनी हो गई, एडिशनल 500। तो अब टोटल कितना हो गया आपका, 600 इमेजेस। अब आपके पास 600 स्कैन्स अब आपके पास अवेलेबल हैं अप्लाई करने के लिए एमएल। अभी समझ में आया बच्चे? Yes, sir. यस सर। तो डेटा एग्रीमेंटेशन टेक्निक हम जनरली यूज करते हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास कई बार हमें जो टास्क करना होता है उसके लिए हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा नहीं होता, तो हम लोग डेटा को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है कि डाटा साइज बढ़ जाता है। डाटा साइज बढ़ जाता है तो जो आपका मॉडल है वो
ज्यादा रूल्स उससे उससे इन्फर कर पाता है, ज्यादा अच्छी तरह से उसे जनरलाइज कर पाता है, क्योंकि क्योंकि ये जो स्कैन्स होंगे ना, वो किसी आप आपके पास जो इनकमिंग स्कैन्स होंगे, आने वाले स्कैन्स होंगे टेस्ट सेट में, उसका आपको नहीं पता कि वो किस एंगल पे होगा, टी किस एंगल पे होगा उसमें उसमें राइट। तो अगर आप डाटा ऑगमेंटेशन टेक्निक अपनाते हैं, यानी कि आप कुल मिला के अवॉइड कर रहे हो ओवरफिटिंग को, जनरलाइज कर रहे हो अपने मॉडल की लर्निंग को, राइट डियर। ठीक है, तो यस सर। ये तो था डाटा ऑगमेंटेशन टेक्निक, हम ये होती क्या है और इसका यूज कितना है। तो डाटा ऑगमेंटेशन टेक्निक से हम कुल मिला के इंक्रीज कर रहे हैं डाटा सेट को, जो कि हमारा सेकंड रूल था अवॉइड करने का ओवरफिटिंग को, राइट। ओके, इफ योर मॉडल इज ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग वाला केस जो हमने देखा था बच्चे, उसमें क्या था कि आपका आप बिल्कुल परफेक्टली उसे फिट कर रहे होते हो मॉडल को, जैसे कि हम इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। व्हाट वी कैन सी इन दिस डायग्राम इन द राइट मोस्ट कॉर्नर, overfitting means you are fitting your model at the time of training will perfectly, that means हर डेटा पॉइंट से होते हुए आपका जो मॉडल है वो उसके बीच में एक सेग्रीगेशन प्रोवाइड कर, दैट मीन्स ये एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है, राइट। तो अगर ये है तो अच्छी बात कि आपने इसको कॉम्प्लेक्स बना के इसको फिट तो कर दिया, बट ये ट्रेनिंग टाइम में किया आपने। टेस्ट टेस्ट डेटा आपका अनसीन डेटा है, आपको नहीं पता कि आपका जो टेस्ट डेटा में एक्स कहाँ पर पड़ा हुआ है, वाई कहाँ पर पड़ा हुआ है डेटा पॉइंट। तो इस केस में आप इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियलिटी है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आप उसको डिक्रीज कर दो, तो आप किस रीजन में आ जाओगे, आप आ जाओगे सेकंड रीजन में, अप्रोप्रिएट फिटिंग वाले रीजन में आ जाओगे, जहां पर आपके कुछ डेटा पॉइंट्स मिस क्लासिफाई तो होंगे, बट मॉडल जनरलाइज हो जाएगा, एक ऐसी लाइन फिट होगी वहां पर, जो कि कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना ही सिंपल है, मॉडरेट कॉम्प्लेक्स है, बट उसकी वजह से आपको जो क्या कहते हैं प्रिडिक्शन मिलेगी, वो गुड मिलेगी दोनों केसेस में, राइट, चाहे वो टेस्ट सेट हो चाहे वो ट्रेन सेट हो, राइट बच्चे। तो इसीलिए कभी भी हम लोगों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं सेट करना होता, क्योंकि अगर उससे चांसेस होते हैं कि हम लोग टेस्ट सेट डेटा में परफेक्टली उसकी आउटपुट ना ले पाए। तो एक सॉल्यूशन आपका ये भी है कि आप रिड्यूस कर दें कॉम्प्लेक्सिटी, और या फिर डाटा को सिंप्लीफाई कर दें। व्हाट इट मीन्स टू से, you use data which are relevant to your output screen, output variable, right? Right. Simply occur due to the complexity of overfitting is occur due to complexity of model, such that even the large volume of data, the model still manage to overfit, right? अगर आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा भी है और अगर आपने ओवरफिट कर रखा है अपने मॉडल को, तो चांसेस आर देयर कि वो टेस्ट सेट पे परफॉर्म ना करे, राइट। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ऐसा फिट ढूंढने की जो ना तो कॉम्प्लेक्स हो ना ही लीनियर वन हो। तो दोनों के बीच में एक ऐसा हम पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी मॉडरेट रहे, और जो आपकी एक्यूरेसी है मॉडल की, वो दोनों ही केस में आपको ठीक ठाक मिल रही हो, सिमिलर मिल रही हो। अगर आपको ट्रेनिंग सेट में 80 मिल रही है, तो टेस्ट सेट में भी नियर अबाउट 80 मिल रही है, तो उस मॉडल को हम अच्छा मॉडल कहेंगे, राइट। बट अगर आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, तो उसमें क्या होगा कि चांसेस आर देयर कि आपको ट्रेनिंग टाइम पे तो 99% एक्यूरेसी मिले, बट यू विल गेट एक्यूरेसी ऑफ 60% ओनली एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, राइट। Okay, so this will be the fourth solution we can have in case of overfitting, right? So reducing model complexity will also solve overfitting problem, right? Okay, next we have ensembling. What ensembling says, you have most of the time, if you are not getting good error from one model, and you are not getting good error, you are getting good error from other model, then there is a chance that good model will perform on particular data set well, but for another data set it is not performing well. But bad model is performing bad on your current data set, but it is performing well on your next data set. So there may be the chances. This is totally based on probability, right? And depending upon the data set you are providing to your model. So what we are having ensembling technique, where वहाँ where हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर ensembling में बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने डाटा पे मल्टीपल मॉडल अप्लाई करते हैं, मॉडल 1,
मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, और हर एक का हम इवेल्यूएशन करते हैं, राइट। हमने डेटा सेट पे निकाला, इसकी इसकी एक्यूरेसी कुछ आई, इसकी एक्यूरेसी कुछ आई, इसकी एक्यूरेसी कुछ आई, इसकी एक्यूरेसी कुछ आई। तो हम लोग, एक तो मेथड होता है बैगिंग, एक होता है बूस्टिंग, राइट। वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में। बट अभी के लिए समझो कि हर एक की कुछ ना कुछ एक्यूरेसी है। इसकी इसकी गुड आई, इसकी गुड, इसकी M1 की गुड आई, इसकी बेस्ट आई ट्रेनिंग टाइम में, इसकी वर्स्ट आई, इसकी गुड आई। तो इंसैम्बलिंग क्या बोलती है कि आप इन सब मॉडल का एवरेज ले लो। या तो आप एवरेज ले लो, या फिर आप इसमें से जो आपका बेस्ट मॉडल है, ये तो जनरल जनरल टेक्निक है कि आप बेस्ट मॉडल को चूज करोगे ही करोगे, राइट। बट इंसैम्बलिंग क्या करती है कि सारे मॉडल्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको एवरेज करके आपका निकाल के दे देती है। यानी कि हर एक मॉडल को आप एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, पाइपलाइन क्रिएट करोगे, और उससे एक एवरेज परफॉर्मेंस आपको निकल के आ जाएगी। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये आपका ट्रेन सेट में तो आपको करेगा ही करेगा काम, इवन टेस्ट सेट में भी करेगा। क्योंकि हो सकता है ट्रेन सेट में इस मॉडल ने गुड दी, इस मॉडल ने बेस्ट दी, इस मॉडल ने वर्स्ट दी, बट ट्रेन टेस्ट सेट में मे बी द चांस ये गुड दे, ये भी ये वर्स्ट दे, और ये गुड दे, और ये बेस्ट दे। तो अगर आप ये वाले पाइपलाइन क्रिएट करते हो, इंसेंबल पाइपलाइन क्रिएट करते हो, मतलब ग्रुप ऑफ मॉडल को कनेक्ट करके और नेस्टेड करके यूज करते हो, तो आपके चांसेस हैं कि आप ओवरफिटिंग को अवॉइड कर दो, राइट डियर। समझ में आ रहा है? आपने यस मल्टीपल सर। मॉडल, हाँ मल्टीपल छोटे छोटे सिंपल मॉडल लिए, उनकी एक्यूरेसी चेक करी, जो जो आपको अच्छे लगते हैं उनको आपने रख लिया, और उनका एक कंबाइन मॉडल बना दिया। मल्टीपल मॉडल्स का ग्रुपिंग करके आपने कंबाइन मॉडल बनाया, जिससे आपको एक एवरेज परफॉर्मेंस मिलेगी। तो जो एवरेज परफॉर्मेंस है ये मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन ही रहेगी, टेस्ट सेट में भी एंड ट्रेन सेट में भी। दिस इज कॉल्ड इनसैम्बलिंग। इनसैम्बलिंग, दिस मेथड इज कॉल्ड इनसैम्बलिंग। दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन machine learning frequently. There are two methods which are boosting and bagging. We will discuss it later on by example, and only you will understand it. So by using boosting and bagging, we can what we can do? We can avoid overfitting, right? And in case of neural network or deep learning, we have another solution, which is early stopping. Like at first epoch, for example, For example, first epoch or iteration, we can say at first epoch you are getting 71% accuracy. Second epoch you are getting 73. Third epoch you are getting 85. Fourth epoch you are getting 95. And fifth epoch you are getting 60%. So what we mean, and sixth epoch you are getting 67. Seventh epoch you are getting 61. So see the trend, you are increasing, but after fourth epoch, you are decreasing, right? So you need to stop your model here, where you are getting reasonable accuracy, right? So this is called early stopping. By using this method also, we can avoid our overfitting, right dear? Stopping training process before the learner passes that point. When you are training a learning algorithm iteratively, you can measure how well each iteration of the model performs. And after a certain point, if you are finding that your accuracy is decreasing, at that point, before that point, you can stop your model training. You can stop your training process, right? You will iterate till the point you are getting maximum accuracy, right, guys? That is called early stopping method. This works on neural networks and deep learning models, where we are having seen and like models, right? See, it is written over mostly here. It is mostly used in deep learning, right? Okay. And last, we have regularization techniques, where we are going to regularize our model. That means we are tuning our model. We are tuning our hyperparameter of model. We have some hyperparameter provided by the model. For example, SVM, we have C, penalty coefficient. In the deep learning, we have weight and biases.
So by tuning those properly, we can avoid overfit our model, right? We will understand it clearly in future classes when we will discuss deep learning, right? So don't worry about it. So by using regularization techniques, we can we can avoid our overfitting, right? So final thought is, at the time of regression, you may find different 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 charts according to overfit, underfit, and optimal fit. This first one is overfitting, showing overfitting in regression. Second row is showing showing overfitting and classification, and deep learning, it is showing training error and validation error. This is how we generate a plot, and then only we can say that our model is overfitting or underfitting. So I think it is clear to you, and that's all for this topic. Thanks, guys.